So right now we are in Chitkul Bridge, the highest suspension bridge of Asia. और काफ़ी सही व्यू है भैया. Did we just start the vlog from somewhere in between of nowhere? That's not right actually. So let's rewind please. Let's play please. And let's Shubham Show vlogs begin from the very beginning. Let's go! मेरे तू है एक बंजारा जाने ना तू क्यों फिरता वारा दिल मेरे तू है एक नकारा माने ना तू क्यों किस्मत का मारा. So भैया हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था चिचम ब्रिज. So थोड़े स्टाइल में एंट्री करेंगे. So guys, this is Chitkul Bridge. This is Asia's highest motorable bridge. This is the high suspension bridge as well. Please like, share and subscribe Casual Wanderers. He's doing amazing job. He's a very hard working guy. Please do that. So guys, let's measure कि ये कितना deep है ये bridge. अब मैं ये पत्थर उसके नीचे फेंकूंगा. Right. अब देखिए मेरे पास छोटा सा पत्थर है, ठीक है. अब मैं इसको फेंकूंगा. पता नहीं इसको हम कैप्चर कर पाएगा नहीं, but casually इसको देखते हैं. अब देखिए आप इसको. आप देख सकते हैं इसको लगभग जो है 8 सेकंड लगा है इसको. 8 सेकंड लगा, एटलीस्ट 4 सेकंड्स लगा होगा. सो इसका फीट अराउंड 400 मीटर से. 400 मीटर. सो हम चिचम ब्रिज से निकल चुके हैं एंड देन वी आर गोना बी हेडेड टुवर्ड्स द बेस्ट मॉनेस्ट्री इन स्पीति वैली व्हिच इज की मॉनेस्ट्री. सो लेट मी शो यू की मॉनेस्ट्री. इट्स रियली 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 अमेजिंग. So let me take you to Key Monastery now. That's the monastery. यहाँ से एक ट्रेल भी निकलता है जहाँ से आपको बर्ड आई व्यू मिलेगा, बट I don't think we can do that. Let's see. चाहे तो रहा है bro. सुने दिन रास्ते उन बाजारों में दिल के फिरता वारा झूठा दिल झूठा जग सारा. So after Key Monastery we are headed towards Langza where we're gonna see the biggest Buddha statue and it's really really beautiful. So let me take you. Bye! सो भैया अभी हम हैं लांगा कोम्पा पे एंड यहाँ पर बहुत ही बड़ा बुद्धा का स्टैचू है. सो आई एम बिफोर आई शो यू प्लीज सी द व्यू. हेलो, कैसे मजा आ रही है? सो जब एक मुंबई का स्नो पहली बार देखता है, दिस इज व्हाट ही गोज थ्रू. So we are at the highest village, Comic, and the views are just insane. And everything is gonna be highest from now on. So I'm gonna show you highest restaurant, highest post office. So let's hear from my excited me going forward. World का सबसे highest restaurant है भैया Comic. Okay, so this is the last one to eat something, and the food here is really, really, really good. Hard. I think I saw you in the water in a weak spot. I think I saw. खाना बहुत ही सही है भैया. कुछ करो ना करो, हॉट चॉकलेट जरूर पीना. एंड हम ऐसे निकलने वाले हैं टू द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड. सो भैया सब हाईएस्ट ही हो रहा है. और भैया का बिल भी बना है भैया 630 का.
खाना महंगा नहीं होता बट मैंने ऑर्डर ज़्यादा कर लिया था, भूख ज़्यादा लगी थी। अब निकलते हैं इधर से। अरे पहाड़ का पानी बहुत ही सही है। सो दिस इज़ द पोस्ट ऑफिस एट 4440 मीटर्स, जहाँ पर चिट्ठियाँ तो डलती हैं पर जाती नहीं है, पर होपफुली जाएंगी। हमारी उम्मीद पे दुनिया कायम है। देख लो यही है। इतना खुशी भाई कभी पोस्ट ऑफिस देख के नहीं हुई। अब सब फोटो वीडियो सब ले रहे हैं भाई, समझ लो इम्पोर्टेंस। फिर मैंने दोबारा सेम लिया। और वो बंदा व्यू देखने के लिए चला था तो फोटो खिंचा रहा है, अश्लील इंसान। उधर यहाँ से आप पोस्ट कार्ड ले सकते हो, एक स्टैम्प मिलता है। तो अगर पोस्ट कार्ड लेते हो तो स्टैम्प जब का पहले स्टैम्प ले लो कि स्टैम्प खत्म हो जाता है। और हम लोग टीम कैप्टन को दे दिया और पोस्ट कर देंगे, बट अगर आप अकेले आ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, पोस्ट नहीं कर पाओगे। तो भैया पहले स्टैम्प फिर पोस्ट कार्ड। सो वी आर राइट नाउ इन डंका मोनेस्ट्री एंड दैट इज़ द मोनेस्ट्री। यू कैन सी पत्थरों से घिरा पड़ा है। और भैया व्यू, सिटी, शहर, विलेज सब बसे हुए हैं इधर। अभी अंदर जाकर पता चलेगा क्या सीन है, तो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो एक्सप्लोर करते हैं प्लेस। भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना भाई, बहुत बहुत मेहनत करता है भाई। Myself, I'm all caught up again. Then I'm all caught up again. Fine, but I'll be awake in the meantime. So I'll walk in as soon as you beeline, and I'll shuffle with the beat and the coke lines. I know. So after Dhankar Monastery, हम निकले towards Spiti Valley, and I'll show you the views on the way, and the valley looks insane. I'll just let go of everything I love. So tell me if I pop my horse back in. Myself, I'm all caught up again. So we are reaching Spiti Valley, and let me show you what heaven looks like. Cause when I pulled up on the street corner. So after Spiti Valley we stopped near this pool because the location looked really cool. So just exploring it and so from here we head directly towards camp in Kaza. We spend the night there, and then the next day we head towards Chitkul, which is one of the most beautiful and amazing place of the entire trip. So let me show you and how beautiful it is. So this is, or we are gonna reach in 5-10 minutes to India's last village. Altitude of 11,380 feet. Actually 20 feet, cancel that. So let's go there and let's see how it is. And if you see that side, opposite side of the mountain, so that side of the mountain is China. So this is the last village in India, and we are here to the last village. So ईस्ट घूम लिया, वेस्ट घूम लिया, नॉर्थ घूम लिया, साउथ भी घूम लिया, सब पहुंच गए आखिरी पॉइंट में। वही इससे आखिरी पॉइंट में नहीं जा सकते आप इंडिया के, और बहुत ज़्यादा रिमोट है एरिया, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है इधर। तो यही सीन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिज यूट्यूब चैनल।
इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आओ तो मैं कैंप साइट दिखाते हैं। तो कैंप का नाम क्या है विशाल? बास्पा रिवर व्यू कैंप्स। पानी आ रहा है भाई पहाड़ के टॉप से। उनके भाई की शक्ल दिखाओ, भाई को डाउट है। डाउट नहीं है, पूछ लो। डाउट कभी तो होता है जब पूछते हैं। हाँ तो उसी ने डुबाया ना। यहाँ भी पानी की फाइटिंग हुई थी। बस ऐसा ही है कुछ, यही सीन है। कैंप्स लेफ्ट में और राइट में, बीच में से एक पानी की वाटर बॉडी जा रही है जिसको नाला बोलते हैं इधर। ये छोटा पानी का स्रोत को नाला बोलते हैं। और ये शानदार है किन्नौर वैली, जिसमें सिचुएटेड है ये चितकुल नाम का विलेज। और ये पड़ता है तिब्बत बॉर्डर के पास। तो ये इंडियाज़ लास्ट विलेज के नाम से बहुत फेमस है। और अभी यहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ पे हम हो आए हैं, वो दिखेगा आपको नेक्स्ट क्लिप में। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा के नाम से है। बस तो फिर आगे बढ़ते हैं अब। सो वी आर इन हिमालयन ड्राइव ऑफिशियल के कैफ़े पे हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े है, लाइक 5-6 ही हैं, बट लाइक मेनली आपको राजमा चावल एंड चाय कॉफ़ी मिलता है और कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। सो आई शो यू अराउंड हाउ इट इज़। फ्रेंड्स इसको बोलो ना एक आध राउंड लगा दे। एंड दैट्स द गैंग। एक बंदा सो रहा है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। I tell myself I'm all caught up again. Then soon as you beeline, and I'll shuffle with the beat and the coke lines. I know. So right now I'm in Chitkul's camp and this is the view. That is the washroom and yeah, it's super cool outside because it's just next to the river. So I'm wearing all this, but I've not taken off my minus jacket. Hopefully it won't be that cold. Let's see, might be. So yeah, not sure, just chill, vibe and then leave from here tomorrow. And for your information, ये इंडिया सबसे cleanest air है. Morning guys, this is Chaitanya. Hi. And I am your vlogger Subham. Now I will tell you about the trail. Cool. We are on a trail to one of the most beautiful waterfalls In in Chitkul. So let's go. So 5 more minutes of trek and I will be reaching there. I would tell photos and videos doesn't do justice to the place that we are encountering. So that was it of Spiti Valley and it's coming to an end, and this was our last destination. After this we headed towards home. So that's it guys, bye.